वेलकम टू यूनिफाइड जंकी में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो जो है हबीब का इंटरव्यू है जो रिसेंटली एमएमए जंकी ने किया था। हम उनका क्रेडिट नहीं लेना चाहते बट ये वीडियो मैं आपके सामने हिंदी में लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। ये वीडियो एमएमए जंकी ने लिया था और ये वीडियो जो है टोरंटो कनाडा में लिया गया। ठीक है। हबीब का इंटरव्यू का एक्सप्लेनेशन करना थोड़ा ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एक थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है। उसके अलावा यह है कि हबीब उन लोगों में से है जो थोड़ा बहुत फिलोसॉफिकल भी है ना? तो सबसे पहली बात मैं आपके सामने कहना चाहूँगा कि मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोग काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं और अच्छी इंग्लिश समझ में आती है। तो ये इंटरव्यू शायद उनके लिए नहीं है। बट फिर भी बहुत सी बातें ऐसी हैं, बहुत से एनेक्डोट ऐसे हैं जो हबीब बताना चाहेगा, पर शायद आपको उसका कॉन्टेक्स्ट पूरा ना पता हो, तो मैं उसको भी पूरा करने की कोशिश करूँगा। ये मेरा ट्रांसलेशन नहीं है क्योंकि मेरे को अगर लगेगा कि यहाँ पे ट्रांसलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इन सब बातों को जानते हैं, तो मैं वहाँ आपको परेशान बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं वहीं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जहाँ मुझे लगता है कि आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है? तो शुरू करते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। ये इंटरव्यू थोड़ा लंबा हो सकता है बट मेरे हिसाब से नॉलेजेबल होना चाहिए। मैं भी आपके साथ पहली बार ही ये इंटरव्यू देख रहा हूँ। ठीक है? ताकि मेरा रिएक्शन थोड़े बहुत नेचुरल हो। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कर दिए, क्लिक कर दीजिए। कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। हबीब के बारे में पहला क्वेश्चन जो एमएमए जंकी की वेबसाइट में है और एमएमए जंकी की वेबसाइट में है बट इस इंटरव्यू में नहीं है, इसलिए मैं बता देता हूँ कि पहला क्वेश्चन जो है वो ये पूछा गया था कि यहाँ टोरंटो आके कैसा लग रहा है बाबा दोबारा। ठीक है। In Toronto. I was here almost 10 years ago, 2013 September, when I was fighting in UFC 165, and when I fight was Pet Kheli. It was almost 10 years ago, but अभी बता रहा है कि पिछले बार जब मैं आया था तो 10 साल पहले आया था और UFC 2 से 165 में आया था, पर उस समय ऐसा था कि मैं इतना फेमस नहीं था। और भी बातें बताएगा, आप सुनिए। that time and this time it was completely different because I remember that time I come alone. It was fight week. I was cutting weight, and no language, no English, no. At that time, it was very, very easy to handle fight week because I was not famous, and. अभी बता रहा है कि उस समय जो फाइट वीक था मतलब वो हैंडल करना बहुत इजी था क्योंकि मैं उस समय इतना फेमस नहीं था। बट कुछ बातें ऐसी भी हैं जो अब बेहतर हैं, जैसे कि हबीब के पास तब लैंग्वेज बैरियर था, इंग्लिश बोल नहीं पाता था और अब आसानी से इंग्लिश बोल लेता है। वैसे जो एक्चुअली एमएमए बेस्ड एरिया है ना, मैं आपको बता दूं कनाडा का, वो ज़्यादातर एक्चुअल में फ्रेंच स्पीकिंग एरिया है, राइट? इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है। बट फिर भी हबीब को दागिस्तानी आती है, रशियन आती है और इंग्लिश भी आती है। जैसे हम जैसे लोग कुछ नॉन नाटक करते हैं ना, जरा से अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, उसको 3 लैंग्वेज आती हैं। एनीवेज़, हबीब ये भी कहना चाह रहा है कि वो फाइट वीक से इस बार थोड़ा ईज़ी है क्योंकि उस बार वो वेट कट कर रहा था, इस बार वो कुछ भी नहीं कर रहा है। ऑल इन ऑल कहना चाह रहा है कि सफल होने के पहले के फाइट वीक और आज के फाइट वीक में क्या फ़र्क है। और ये फाइट वीक वैसे ही उसका नहीं था, उसके कज़िन का था। And now I come back after 10 years here in Toronto, not for fighting, for meeting my people. And अभी भी कहता है कि मैं यहाँ फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, अपने लोगों से मिलने के लिए आया हूँ। तो इट्स अ पैंडरिंग टू ऑडियंस, सो दैट्स ओके। मैं खुद इंग्लिश में बोलने लगा, राइट? पैंडरिंग को हिंदी में क्या कहेंगे? ऑडियंस को खुश करने के कुछ डायलॉग्स होते हैं, उनमें से एक हबीब मार रहा है और मैं हबीब ही कहूँगा क्योंकि नाम हबीब ही है। amazing feeling, amazing feeling. That's amazing, man. So, speaking of Niagara Falls and like falls and rivers, you grew up in Dagestan. You grew up in the mountains, and from a young age, your father had. वो बोल रहा है कि जैसे कि हम अभी नायग्रा फॉल के पास हैं, वैसे ही तुम भी वैसी जगह में पैदा हुए जहाँ पे माउंटेन्स हैं, जहाँ रिवर्स हैं। अब वो उसके पिता के बारे में बात करेगा। You training in ways that none of us could imagine. You were swimming in dangerous rivers. You were fighting bears, and you had a kind of routine that the average young person wouldn't have. वो बोल रहा है कि तुम्हारी जो स्थितियाँ थी वो हमसे कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। कभी तुम बेर से लड़ाई कर रहे हो, तो कभी तुम बहुत खतरनाक नदी में तैर रहे हो।
हमारी स्थितियाँ तुम्हारी स्थितियों से बिल्कुल अलग हैं। Could you tell us what it was like and what you learned from that time growing up? बोल रहे हैं कि हम जानना चाहेंगे कि उस समय से तुमने क्या सीखा? You know, this is my young age. You know, when I was grew up in Dagestan with my father in my village. It was good time, and same time it was not fun time. You know. वो बोलता है उस समय के बारे में कि कुछ एस्पेक्ट में यानी कि कुछ तरह से कहा जाए तो वो एक अच्छा समय भी था और एक प्रकार से कहा जाए तो अच्छा समय नहीं भी था। it was it was hard life, and before we moved to capital city and Makhachkala from small village, you know, even when I moved from village to capital city, it was hard, not because of life, it was hard because of language barrier. वो बता रहा है कि ज़िंदगी पहली बार डिफ़िकल्ट तब हुई उसकी जब वो अपने गांव से जो कैपिटल सिटी है दागिस्तान के मखचवला वहाँ पे गया तो बोला कि लाइफ डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं थी क्योंकि लाइफ स्टाइल अलग अलग था गांव और शहर का। डिफ़िकल्ट इसलिए थी क्योंकि लैंग्वेज बैरियर था। वहाँ पे ज़्यादातर रशियन बोली जाती थी और जहाँ से दागिस्तान जहाँ से हबीब पैदा हुआ था जिस गांव में वहाँ दागिस्तानी बोली जाती थी। ठीक है। Because in Dagestan we have like 30, 36, 37 different languages, and nobody understand each other. वो बोल रहा है कि दागिस्तान में 36 लैंग्वेज बोली जाती है और कोई भी एक दूसरे को नहीं समझ सकता। And this is completely different language, like, and to understand each other we have to speak in Russian language, and because वो बोल रहा है कि क्योंकि हम 36 लैंग्वेज वाले हैं, सबकी अलग-अलग लैंग्वेज है, कोई एक दूसरे को समझ नहीं सकता, इसीलिए हम एक दूसरे से बात करने के लिए रशियन लैंग्वेज में बात करते हैं। मैंने बोला था ना रशियन लैंग्वेज। of I was living in a village, in my village we speak in Dagestan language, and when we moved to capital city, it was very hard to connect with people. And you know, like some people, they surprise, like, oh, how you speak like so fast in English, but they don't understand this is my not second language, this is my third language, you know. And I hope they understand my language right now. हबीब बोलता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं कैसे इंग्लिश बोल लेता हूँ और लोगों को लगता है कि इंग्लिश मेरी सेकंड लैंग्वेज है बट इंग्लिश एक्चुअली मेरी थर्ड लैंग्वेज है, दागिस्तानी, रशियन और इंग्लिश। ठीक है। Feel you. और हाँ, वो एंड में ये भी बोलता है कि उम्मीद है कि लोग मुझे समझ पा रहे होंगे। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ। मेरे कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज में जो इंग्लिश के टीचर थे तो एक बात होती है सिमेंटिक गैप। सिमेंटिक गैप होता है मैंने जो बोला और आपने जो सुना। अगर मैंने जो बोला और आपने वही सुना नहीं वही समझा तो सिमेंटिक गैप नहीं है। पर मैंने जो बोला और आपने जो समझा उसमें अगर थोड़ा बहुत भी डिफरेंस है तो दैट इज़ कॉल्ड सिमेंटिक गैप। इसलिए कभी कभी बोलते हैं ना कि यार ये इंग्लिश सही नहीं बोल रहा है, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि इंग्लिश वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप उसे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है। जैसे कि जो अफ्रीकन अमेरिकन है वो अलग लहजे में अमेरिका में बोलते हैं। अ, जैसे कि ना आई एम नॉट डूइंग दिस सो आई एन डूइंग दिस भी चलेगा बट दे आर नॉट डूइंग दिस। इवन वहाँ पे भी वो लोग कहेंगे दे एंड डूइंग दिस। ठीक है। पर दोनों जगह ग्रामेटिक एक ग्रामेटिकली सही है एक ग्रामेटिकली गलत है बट दोनों में जगह पे हमको अर्थ समझ में आ रहा है इसीलिए दोनों सही है। ठीक वैसे ही हबीब जिस लैंग्वेज में बोल रहा है वो हमें लग सकता है कि मतलब ग्रामेटिकली गलत है बट उसकी वो दूसरी लैंग्वेज है और बोलचाल से सीखा है। तो वो जो बोल रहा है अगर हमें समझ में आ रहा है तो कोई सिमेंटिक गैप नहीं है यानी कि परफेक्ट लैंग्वेज है। I want to speak a little bit more. All right, there we go. I want to speak more about your father. May Allah have mercy on him. But he made the path possible for you, you know, and he taught a lot of the community. I know that he was like a leader in the community. He was coaching and training a lot of people. And now you're a coach, and now you're a father. And so what are the things that your father taught you in that time that you carry forward now that you're in the positions that he was in?
वो बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे अपने आपके पिता के बारे में बात करना चाहूँगा। आपके कोच जो हैं आपके आपके पिता जो हैं आपके कोच भी थे और आपके पिता भी थे। ठीक वैसे ही आज आप वहाँ पे खड़े हो जहाँ पे आप किसी के पिता भी हो और कोच भी हो, तो आप कैसा महसूस कर रहे हो और दोनों को कैसे कंपेयर करते हो? Yes, it's like time goes so fast, you know. Right now I become on position what my father was. You know, he was, you know, and he was father. I become father. He was coach. I become coach. वो बोल रहा है कि समय बहुत तेज़ी से आगे निकलता है। मैं आज वहीं पे खड़ा हूँ जहाँ मेरे पिता वही वही काम कर रहा हूँ जो मेरे पिता करते थे। वो एक पिता थे, आज मैं एक पिता हूँ। वो एक कोच थे, आज मैं एक कोच हूँ। You know, it's like crazy. I remember like yesterday I was like kid. You know, I was a student, and the last 10 years, so much happening around me. वो बोल रहा है लगता है कि ऐसे कल की ही बात लगती है कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ और आज कहाँ पे हूँ। And I think this is like life experience, you know. It's like best teacher. This is life. When life teach you and you learn, and you know, it's like this is very good mix, you know. वो बोल रहा है कि ज़िंदगी एक टीचर की तरह है और आपको सिखाती है और अगर आप गलतियाँ करते हैं तो उनसे सीखते हैं। Everyday life give you some lesson, हर दिन ज़िंदगी आपको कुछ सिखाती है। and you learn, you have to become better. बोला कि आप सीखते हैं और तुम्हें हर दिन आप बेहतर होते हैं। मतलब हैव टू नहीं कहना चाह रहा, यू गेट ही वांट टू से दैट यू गेट बेटर। ठीक है? Because some people they make mistake and they never wanna fix this, you know. And कुछ लोग होते हैं तो जो गलतियाँ करते हैं और उसे कभी सुधारना नहीं चाहते। it's good when life teach you, when you see what happening around you, when you can make good decisions. You know, it's like a lot of things happen around me, and yeah, it's like right now I am on position what my father was. You know, वो बता रहा है कि आज मैं उसी पोजीशन में हूँ जो मेरे पिता के पास है। हबीब समझाने की कोशिश कर रहा है, बट आई डोंट नो कि वो समझ पा रहा है कि नहीं। Amazing, man. And I guess moving more into like you as a coach, you have Islam, you know, and you also have Usman who just won the वो उस्मान के बारे में बात कर रहा है। Bellator champion. He's the Bellator champion. And so, like, you know, what is the feeling of having, like, you know, fighters, especially Usman being your cousin, you know, and having the people that you love and that you know and that you've trained go out there? And what's the difference for you in feeling from being a fighter and being a coach? बोल रहे हैं कि फाइटर और कोच होने में क्या फ़र्क है जब एज़ अ फाइटर आप जीतते हो और जब आपके सिखाए फाइटर जब जीतते हैं। you know what? Interesting. Like people call like example like Usman is my cousin, but लोग बोलते हैं वो बोलता है कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि लोग बोलते हैं कि उस्मान मेरा कज़न है। he just born 1998 बोला कि वो पैदा हुआ था 1998 में, when I just meet Islam. तो बोलता है कि 1998 में तो मैं इस्लाम से मिला था। I think sometimes Islam is more my cousin than Usman, you बोला कभी-कभी मेरे को लगता है कि इस्लाम मेरा कज़न ज़्यादा है उस्मान से। know. You never know who is your real cousin. वो बोला तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हारा कज़न कौन है, राइट? हबीब इसको अपने कलोकियल टर्म्स में अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है, बट मेरे को नहीं लगता कि वो आदमी उस बात को समझ रहा है। वो उसको अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में या टोरंटो वाले कॉन्टेक्स्ट में लेगा और शायद उसका मजाक बनाने की कोशिश करेगा। देखते हैं। You know, Yeah, we भैया know all about that here. it's like Islam younger than me like more than 3 years, and this is we was growing up together, training together all life, and Usman younger than me 10 years, and this is big difference. बोला कि इस्लाम जो है मेरे से 3 साल से थोड़ा ज़्यादा छोटा है और उस्मान जो है 10 साल छोटा है। But even we still train together. I push him a lot, बोला कि हम साथ में ट्रेन करते हैं और मैं उसे काफ़ी पुश करता हूँ। and yeah, right now we have current UFC and Bellator lightweight champions. बोला कि अभी हमारे पास का यूएफसी और बेलाटोर के लाइट वेट चैंपियन है। Amazing. And this is वैसे एक बहुत अच्छी बात है कि वैसे तो बड़े-बड़े जिम हैं, राइट? विंकल जॉन ग्रेग और विंकल जॉन वाला है। चाहे एटीटी हो, चाहे सैनफोर्ड एमएमए हो, चाहे एमएमए फैक्ट्री हो, चाहे आपका
अभी जो क्राउस का बंद हुआ है जिम हो या फिर हैंड्सो ग्रेसी वाला जिम हो या एके हो, इन सब में एके इकलौता ऐसा जिम है जिसमें फाइटिंग की क्लास के बाद इंग्लिश कोचिंग की क्लास होती है। हबीब की कुछ इंग्लिश इसीलिए अच्छी है, बाकी बहुत सारे रशियन फाइटर हैं जो ऐसी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। Amazing. This is amazing. I hear like long time ago when one guy was talking about we here to take over, but we here to take over. वो बोल रहा है कि कुछ सालों पहले एक आदमी आया था जो बोल रहा था कि हम टेक ओवर के लिए आए हैं यहाँ पे, बट एक्चुअल में हम टेक ओवर के लिए आए हैं यहाँ पे। अब जैसे कि मैंने बोला कि बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो जिस आदमी की बात कर रहा है वो कोई और नहीं, कॉनर मैकग्रेगर है। मेरे ख्याल से डायलॉग कुछ इस तरह का था कि वी आर नॉट हियर टू टेक पार्ट बट टेक ओवर। मैं कंफर्म नहीं हूँ बट इसी टाइप से कोई डायलॉग था, तो हबीब उसका मजाक उड़ा रहा है। And you know what interesting is like I coach not a lot of people. I coach like people who was around me. Like when I was active fighter, it's like this is like maybe 12, 15 guys, you know, and I just on the way to a venue. बोलता है कि मैं बहुत सारे लोगों की कोचिंग नहीं करता हूँ, बल्कि सिर्फ उन्हीं लोगों की कोचिंग करता हूँ जो मेरे साथ थे जब मैं फाइट कर रहा था। Here to arena, I was watching like we like 13 people we have combined win in MMA almost 300 fights. बोला कि हम जो 13 लोग हैं उनके पास एमएमए में 300 से ज़्यादा जीत हैं। And this is crazy. Nobody ever did this in MMA before. बोला कि हमसे पहले किसी ने ये एमएमए में नहीं किया था। It's never happened, you know, and I'm very happy because of this, because I know it was my father hard work, the way how he बोला कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पिता का हार्ड वर्क है, उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। invest us, the way how he teach us, the way how he push us, you know, it's like everything. Right now, even now, his legacy keep going, you know. बोला कि उसके पिता की लेगेसी आज भी आगे जा रही है क्योंकि हम उसे आगे लेकर जा रहे हैं। Amazing, man. It's true what you're saying about how it's never been done before. And in your professional life, you're undefeated. And as a coach, you're also nearly undefeated. And I guess the question of failure comes up, you know? And we don't see any of your failures because we've only seen you win, you know? And so what are your ideals on failure? Like, how do you deal with failure in your personal life or outside of what we see? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं जवाब क्या होता है। क्वेश्चन ये है कि तुम अपनी ज़िंदगी में अनडिफीटेड रहे और एज अ कोच भी अभी लगभग अनडिफीटेड हो, वैसे एक लॉस हो गया बट लॉस नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। कोच एज अ कोच भी अनडिफीटेड हो तो ज़िंदगी तो फाइटिंग की दुनिया में तो तुमने ज़्यादा हार देखी नहीं है, बट आपका क्या विचार है कि इनसाइड रिंग और आउटसाइड अगर फेलियर हो तो उससे कैसे डील करना चाहिए? I don't do nothing. I'm just not. I I try to no stress, you know. Yeah. Like if something happen, it's happen, you know. What we can do, you know. I feel बोला कोई चीज़ होती है तो होने दो उसे, उसके बारे में हम कर क्या सकते हैं। बोला कि ज़्यादा सोचने का नहीं। you. I'm not joking. Why? All right, I have a serious question. Yeah. Okay. So you can coach anyone you want, and I want to know like what do you look for in a fighter? Like what are like kind of the values that you look for, like you know when you're kind of identifying a fighter that you want to train? बोला कि अगर किसी फाइटर को आप ट्रेन करना चाहते हो तो कौन सी वैल्यू आप उसमें देखोगे ताकि उसको ट्रेन करने के लिए चुनो। वैसे तो मेरे ख्याल से अभी ने कुछ देर पहले ही कहा है कि वो सिर्फ उन्हीं को ट्रेन करता है जिनके साथ जो उनके साथ थे फाइटिंग के समय। Like coach or like fighter? As a coach, like what's the kind of fighter that you want to identify to actually train? Because there's so many people that would want to be trained by you, but what are like some of the characteristics? For instance, basically what I'm trying to ask is, like, if I wanted to train with you, and if I wanted to fight, like, what would I have to do? You know what I mean? In order to, because I'm born in '96, I know Usman's born '98. I got 2 years on him. You know. No, first of all, you have to follow my rules. बोला कि सबसे पहले तुमको मेरे रूल फॉलो करना पड़ेगा।
you have to follow my rules. You know, it's like it's not easy. I think because I don't think I'm nice coach. I'm nice person. No, I'm like I think I'm nice person, not bad person. But like a coach, no, I'm not a nice person. हालाँकि मैं हो सकता है कि अच्छा आदमी हूँ, बट मैं नाइस नाइस समझ रहे हैं? अच्छे और नाइस में फ़र्क समझ रहे हो? पोलाइट, यानी कि मैं उस टाइप का कोच नहीं हूँ। And I'm not joking, so you guys have to join with our training. Then you guys not gonna smile. बोला कि आप लोग हँस रहे हो, पर अगर आप मेरी ट्रेनिंग जॉइन करोगे तो हँसी खत्म हो जाएगी। I know this for sure. I think I can handle it, honestly. Like, I'm like, I'm here, I'm from, where I'm from here, Regent Park, I dealt with a great deal of things. I think I'm prepared. It prepared me for this conversation. Okay, like I don't finish. Sorry about that. it's like बोला कि वैसे मैंने अभी मेरा जवाब अभी ख़त्म नहीं हुआ था, बट फिर भी ठीक है। some people, like when they just join with my training camp, they don't understand like a lot of things and like beginning, but the way how I watch right now how guys training in MMA, they do a lot of stuff they supposed to not do. You don't need to do like 1 hour meets work or CrossFit, lifting like this. I told my guys always, if you wanna become success MMA fighter and you like from Dagestan and you know how to wrestle everything like a little bit, you need every day you have to grapple and wrestle 1 hour. If you don't wrestle and grapple 1 hour every single day, this is not MMA training. Okay, if you ओके, हबीब कह रहा है कि जब लोग बहुत सारे जॉइन करते हैं तो उनको बहुत सी चीज़ें पता नहीं होती हैं। उन्हें लगता है कि मिट्स मतलब बॉक्सिंग की ट्रेनिंग या वाली ट्रेनिंग ज़रूर करना चाहिए, पर उसको लगता है कि अगर आप उस पार्ट से हो, यानी दागिस्तान के पार्ट से हो, तो आपको हर दिन कम से कम 1 घंटा रेसलिंग करना चाहिए। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। कॉन्टेक्स्ट कैसे पता चलेगा कि अभी-अभी क्या हुआ, कुछ दिनों पहले बिलाल मोहम्मद ने इनका कैंप जॉइन किया। बिलाल मोहम्मद अपने कैंप में क्या करता था कि 50-50% स्ट्राइकिंग पे ध्यान देता था और रेसलिंग पे ध्यान देता था। बट हबीब के कैंप को जॉइन करने हबीब का कैंप नहीं जॉइन किया उसने, हबीब के साथ ट्रेन किया है। तो हबीब के साथ ट्रेनिंग करते समय उसे पता चला कि 80% रेसलिंग करना पड़ता है उधर पे, और बाकी जो 20% टाइम है आप दुनिया भर की चीज़ करो, क्योंकि आपकी जो कमांडिंग स्ट्रेंथ है, आपकी जो मेन स्ट्रेंथ है वो रेसलिंग है। you guys wanna do fitness, like around the world, millions and millions girls doing this same training, like you know, they do fitness training. They train too. I love that. I guess Not finished, man. you're not finished. Okay. बोला अभी मैं फिनिश नहीं हुआ। Because बोला पहले वो बता कि अगर फिटनेस वाली ट्रेनिंग करना है जैसे सब कोई करते हैं, तो उसके लिए दुनिया भर की लड़कियां सिखाती हैं, उधर जाके करो। कभी कभी ना पेट्रियार्कल मेंटालिटी आ जाती है हबीब की, जहाँ पे वो सही नहीं है। खैर उस बारे में कभी और बात करेंगे। it's like if you don't wrestle, like for example 1 hour today, and sometimes I message my guys because I'm traveling a lot. It's like I try to control them, and I message them like, what you do today? Like he say, oh, I was training. Like what training? What kind of training? I was running and lifting. This is not MMA training. बोला कि जब मैं मतलब जिम में नहीं होता हूँ, बाहर घूम कहीं होता हूँ, फ्लाई कर रहा होता हूँ, तो मैं फ़ोन करके पूछता हूँ या मैसेज करके पूछता हूँ कि तुमने आज क्या किया, और अगर वो बोलते हैं ना कि You have message them like, what you do today? Like he say, oh, I was training. Like what training? What kind of training? I was running and lifting. बोला कि अगर मैं रनिंग और लिफ्टिंग करता हूँ, तो हबीब बोलता है कि ये एमएमए ट्रेनिंग नहीं है। This is not MMA training. You have to compete with the fighters. You have to wrestle, grapple. It's like spar. You cannot just call it like you was training. Like if you run like 20 minutes and you're lifting like 40 minutes. This is fitness training. This is not MMA training. I ask you what you do in MMA training. I don't ask you how many times you run. I don't care about how many times you run.
And this is very, very important things. A lot of MMA fighters, they make mistake. I know because I've watched, I follow everything, and they will have a lot of fighters train. Like, I don't like this. Amazing. Now that we're here, can we talk about like fight day? Like what happens on fight day? You know, it's like for those of us aspiring, you know? बोला कि हम जैसे लोग जो एस्पायर कर रहे हैं उनको वो जानना चाहेंगे कि फाइट डे में क्या होता है। Fight day, like for example, like the day before you make weight, and next day, and it's like because, for example, right now, most of the fighters they cut like almost 10 kilo, like. बोला कि एक दिन पहले वेट करते हैं और ज़्यादातर फाइटर जो हैं लगभग 10 किलो के आसपास वेट गेन कर लेते हैं। अब इन चूतियों को बताना पड़ेगा कि किलो को पाउंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया जो है ना वो किलो पे आ गई है, पर ये अभी भी पाउंड में है। पूरी दुनिया जो है ना लेफ्ट हैंड साइड पे कार चलाती है, बट ये हरामी अभी भी राइट हैंड साइड पे कार चलाते हैं। खैर, मैं कहीं और चला गया। Most of them, and 10 kilo is like almost how many, like 20 pounds. देखा, मैंने कहा था ना वो पाउंड के बारे में बताएगा। लगभग 20 पाउंड बोल रहा हो। 20-25 pounds. They वो पानी पी रहा है क्योंकि उसको नहीं पता है। almost all fighters cut like this, and next day they gain this almost 10 kilos back. And morning you have to sweat, you have to train a little bit, you have to sweat, you have to feel your weight again. And of course morning when we wake up before breakfast we train a little bit, like 30 minutes, 40 minutes like this, then breakfast, go sleep, and that's it. Just stay away from everybody, stay alone. I like stay alone, you know, because वो अपनी बता रहा है कि आप सुबह उठो, प्रैक्टिस करो, ब्रेकफास्ट करो और वापस से सो जाओ और दिन भर कोशिश करो कि दूसरों से अलग रहो। बोला कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आई लाइक टू स्टे अलोन। people, if you're gonna go and talk with people all day, they take your energy, you know. This is very important to keep your energy. मतलब आप दुनिया भर में घूमोगे और बात करते रहोगे तो वो लोग आपकी एनर्जी लेते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अरे मैं फिर इंग्लिश बोलने लगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी कंजर्व करें। And it's very important to stay alone and stay, if you can sleep. Like a lot of fighters, they cannot sleep because they wake up and they're very excited about to fight night, you know. A lot of guys, they cannot sleep, but I prefer to sleep, and I prefer to sleep even when we come to the arena and we have like 3-4 hours before the fights. I sleep. बोल रहा है कि सोना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे फाइटर जो हैं अगले दिन फाइट है तो सो नहीं पाते, बट आई लाइक टू स्लीप। ये भी होता है कभी कभी कि अरीना में अपन मतलब जहाँ पे फाइट होने वाली वहाँ पे भी अगर पहुँच जाते हैं और 5-6 घंटे रहते हैं तो मैं सोने की कोशिश करता हूँ। I know it's like a lot of people, they don't understand, but I just say, brother, I'm gonna sleep 1.5 hours. I can sleep like this. I don't know about yourself. Like I can sleep like when I want, I can lay down and sleep like 1 hour, 40 minutes, 1.5, like whatever I need. मतलब कि मैं जब भी चाहता हूँ सो सकता हूँ। I sleep. काश की ऐसी पावर मेरे पास होती। साला नींद ही नहीं आती। एनीवेज, Wake up, like good warm up, and try to enjoy inside the cage. That's amazing. And actually, there is like a hadith by Muhammad बोला कि उठने का, थोड़ा वार्म अप करने का और इनसाइड केज फिर। where he says, take naps because the devil doesn't take naps. And What is this naps? huh? What is Naps is like is what बोला कि टेक नैप्स, तो पूछ रहा है कि नैप क्या होता है। you're doing, like 1 hour sleep, 1.5 hours of sleeping, like, you know, just like temporary sleeping through the day. So like you're doing the sunnah, you know, you're doing what the devil's not doing is what I'm trying to say. I think even outside of like the fighting and the training, what we witnessed from you is that you have like true integrity as a human being, and we feel it in the way that you move. You're very composed, and I think that composure is hard to achieve. And you started the Eagle Fighting Championship. वो बोलता है कि फाइटिंग के अलावा भी हम जहाँ कहीं भी तुम्हें देखते हैं तो तुम्हें काफ़ी इंटेग्रिटी, यानी कि कहना चाहिए एक ईमानदारी होती है ना, वो नज़र आती है। And you decided you weren't going to take any partners, you weren't going to have any partnerships with alcohol companies.
बोला कि जब तुमने अपना ईगल फाइट प्रमोशन चालू किया तब भी तुमने बताया कि किसी भी शराब की कंपनी से तुमको कोलैबोरेशन नहीं करना or gambling companies, या गैम्बलिंग कंपनी से कोलैबोरेशन नहीं करना। and which is incredible, you know. And I guess the question is, as a person that's always kept his integrity, why was it important for you to make decisions like that, not aligning with companies like that? बोला कि ये डिसीजन क्यों तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट था? Because money is not everything. क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है। You know, they try to give, they pay good money, you know, it's like alcohol, like bad companies, you know, they, most of them promotions, they still alive, let's say like this, like they still alive because of these companies, they pay good money, you know, but I prefer to say no, and that's it, you know. It's like because these kind of things, they kill our generation, you know, new generation, you know, young guys, you know. बोला कि ये जो कंपनियां हैं अल्कोहल कंपनी हो चाहे बैटिंग कंपनी हो अच्छा खासा पैसा देती हैं बट मैं इनको ना कहना पसंद करता हूँ क्योंकि मेरे ओपिनियन में ये आने वाली पौध को बर्बाद कर देती हैं, आने वाली जनरेशन को बर्बाद कर देती हैं। And I cannot promote this in my platform. My इसलिए मैं platform, अपने I create प्लेटफॉर्म this में इनको platform प्रमोट नहीं only कर सकता। like sport, like people, like fighters, like athletes, they can come and compete, not like go to the outside when you're strong to smash weak people, you know. No, this is, if you want to fight inside the cage, you know. And this is competition. This is not to promote some alcohol or bad companies. वो बोलता है कि ये जो है ये कंपटीशन प्रमोट करने के लिए है, ये अल्कोहल बेचने के लिए और बैटिंग के लिए नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कभी क्या अभी का चल क्या रहा है ईगल एफसी में। खैर, वैसे हबीब जो बोल रहा है बहुत पैसा आता है अल्कोहल से और बैटिंग से, इसीलिए अभी यूएफसी में एक बैटिंग का बहुत बड़ा लफड़ा चल रहा है पर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जब तक मेरे पास नहीं आएगी तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। You know, I don't create this platform because of this, you know. That's why I say no. I love that, man. It's beautiful. I guess, and on that question, I think people will always make assumptions with the decisions that you're making, you know, based on your Islam and your identity as a Muslim. And a lot of times it's hard to have to have to carry those kinds of burdens and expectations. People have a lot of expectations of you as a Muslim. And how do you kind of like juggle like your personal relationship with Allah subhanahu wa ta'ala and Islam and the way that it is publicly as well? बोला कि लोग तुम्हारी आइडेंटिटी के साथ सारी चीज़ों को देखते हैं एज अ मुस्लिम। तुमको कितना दबाव लगता है कि एज अ मुस्लिम तुमको कैसे बिहेव करना है, तुम अपनी आइडेंटिटी एज अ फाइटर कैसे देखते हो और एज अ मुस्लिम कैसे देखते हो कि एज अ मुस्लिम तुमको सही रिप्रेजेंटेशन देना है उनको या नहीं। It's not easy. It's not easy. I'm gonna be honest. बोला मैं ईमानदारी से बताऊँ तो ये इजी नहीं है। It's not easy, and just try to don't wear mask. बोला कि कोशिश करो कि मास्क ना पहनो, यानी कि हबीब ये बोल रहा है कि झूठा परसोना बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो है वही रहो, मास्क मत You पहनो। know, with mask, it's very hard to walk. You know, Yeah. just be yourself, and you know, देखा? sometimes with mask you cannot move like years and years. One day your mask gonna go down, and people gonna see your real face. बोला मास्क के साथ दिक्कत ये है कि तुम ज़िंदगी भर मास्क पहने नहीं रह सकते, एक ना एक दिन वो मास्क गिरेगा और तुम्हारी असलियत लोगों के सामने आ जाएगी, तो पहले से ही जैसे हो वैसे ही रहो। No, and just be yourself. And you know, it's like I don't like to like this with fame, like what come to me. Like I don't like to when people say like, oh, this is like example, like something like this. No, I'm not example. I don't want to be example, and I never try to be like to be example for. ओके, हबीब कह रहा है कि लोग कहते हैं कि ये एग्जाम्पल है, बोला कि आई डोंट लाइक टू बी एग्जाम्पल, मेरे को एग्जाम्पल नहीं बनना। एक्चुअली हबीब ये कहना चाह रहा है कि वो एक आइडियल टाइप का है कि आइडियल मुस्लिम है। बोला कि मैं नहीं आइडियल मुस्लिम बनना चाहता और ना ही मैं आइडियल मुस्लिम का एग्जाम्पल हूँ। राइट, वो जैसा है वैसा दिखाता है। People, you know, I have small community around me, like my kids, my family, my brothers. I try to give them example, and of course, because I'm famous, I cannot do nothing with this, you know. But it's not easy, you know.
Yeah. For sure. All right. Love you too, brother. I didn't see you. I love you too. On a lighter note, the World Cup is happening, and I guess on the topic of the World Cup, what was your favorite World Cup growing up? If you like experienced one, or if there's one you're really connected to, and who are you rooting for this year? बोला कि वर्ल्ड कप जा रहा है और जब तुम बड़े हो रहे थे तो तुम्हारी सबसे मेमोरेबल वर्ल्ड कप क्या है और इस साल तुम किसके लिए रूट कर रहे हो। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, अजीब सी बात है ना, पूरी दुनिया वर्ल्ड कप इस गेम को फुटबॉल कहती है, अमेरिकन इसको सॉकर कहते हैं और उनका फुटबॉल जो गेम है ना वो जो रग्बी का एक और वर्जन है उसको कहते हैं। और उस गेम में 95% टाइम बॉल हाथ में रहती है, ठीक है। किक मारने का दौर बहुत ही मुश्किल से आता है और जिस टाइम में 95% टाइम बॉल हाथ में रहती है उसको हैंड बॉल नहीं, वो फुटबॉल कहते हैं। और जो एक्चुअल गेम फुटबॉल है जिसमें 99% टाइम बॉल जो है फुट पे रहती है गोली के अलावा, उसको वो सॉकर कहते हैं। है ना अजीब सी बात। एनीवेज, हबीब का जवाब सुनते हैं। Today morning, I just was watching like opening ceremony, like Ecuador, Qatar, this game. Like you know what interesting? I was watching Canadian TV and I see like these people was talking about football and these people don't understand nothing. बोला कि मैंने देखा कि कैनेडियन टीवी में लोग फुटबॉल के बारे में बात कर रहे थे और दे डोंट अंडरस्टैंड। मैं बोल रहा हूँ ना, फुटबॉल के बारे में उनको नहीं पता है। वो इतने बड़े चूतिए हैं कि बेसबॉल की जो सीरीज होती है ना उनके तरफ उसको वो वर्ल्ड सीरीज कहते हैं। कोई और टीम है क्या बेसबॉल की? इंडिया की जाती है कि टीम, क्या रशिया की टीम जाती है, पाकिस्तान की टीम जाती है कि नहीं जाती? फिर भी उसको वर्ल्ड सीरीज कहते हैं। उनकी अपनी ही दुनिया है अलग। This is like why like biggest TV in Canada they bring these people and they talk about football and I can see like I can understand they never watch football, you know. मतलब मैं देख के बता सकता हूँ कि वो जो कमेंट्री कर रहे हैं वहाँ पे उनको फुटबॉल कभी नहीं देखा, जैसे इंडिया में कमेंट्री करते हैं जिनने एमएमए कभी नहीं देखा। I don't know how popular in Canada is football. I know hockey is like very popular here, but football I think here is like not many people understand football. I think people love football in this crowd for sure. To be honest, I'm not gonna lie, I don't watch football very often. So like, I can't really defend the Canadian team. I don't even know who's on the team. बोला कि टू बी ऑन, वो बोल रहा है कि मैं ईमानदारी से बताऊं तो मेरे को पता भी नहीं टीम में कौन है। But is there a team that you're excited about? Canada? No, not Canada. In the World Cup. You know, I watch. I was following like this sport from 1996. I remember first time I watched Euro. It was 1996 in England when England was. I was 8 years old. I remember like I watched with father. It was semi-final of Euro, England versus Germany. मतलब यूरो 96 का जो फाइनल था इंग्लैंड वर्सेस जर्मनी का, तब से मेरे को याद है। And from that time I follow everything about football, like all World Cup, Euro, Champions League, Premier League, like Italian, Spanish, like English Premier League, like everything. You know, this sport is for me is like still on the top. You know, like even like MMA, like fighter, like I become like accidentally. You know, I don't know how I become fighter. बोला कि ये स्पोर्ट मेरे लिए आज भी सबसे बेहतरीन है, एमएमए से भी ज़्यादा। अब अमेरिकन को ये समझ में नहीं आएगा कि जिस स्पोर्ट के बारे में उनको 90% घंटा नहीं पता होता है, वो स्पोर्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस क्यों है। और वो स्पोर्ट जो वो खेलते हैं दुनिया में कोई और नहीं खेलता, पर उनको लगता है कि वो स्पोर्ट सबसे अच्छा है क्योंकि वो अमेरिका है। I love football. Amazing. Do you have any favorite athletes outside of fighting or even within fighting? You know, are there athletes that you're looking at? You could also. उसके फेवरेट एथलीट्स के बारे में पूछ रहा हूँ, फाइटिंग और फाइटिंग के बाहर। फाइटिंग या फाइटिंग के बाहर। You know, sometimes you meet your heroes from your childhood time. You know, it's like and I don't wanna talk bad about nobody tonight. And I think like when I was 10, it was Ronaldo, Zidane. When I was young, you know, I was like 10,
No, no, old Ronaldo. You guys don't understand बोला कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो उस समय रोनाल्डो जिदान, मैं बताया वो रोनाल्डो ब्राजील वाले रोनाल्डो की बात कर रहा है, पुर्तगाल वाले नहीं। what I'm talking about. I know you guys support Messi, but this is what I'm talking about. Today I was watching Canadian TV and like I can say they don't understand nothing about football, you know. Oh, that's amazing, man. No, this World Cup, I'm gonna choose 3 team, and maybe you guys don't like this. बोला कि इस वर्ल्ड कप में मैंने 3 टीम चुनी है और शायद आपको ये पसंद ना आए। I think England gonna do very well. England. I think Brazil is very good, and I think Netherlands. इंग्लैंड, ब्राजील और नीदरलैंड के बारे में बोल रहा है, ये टीम बहुत अच्छा करने वाली है। Netherlands. No, it's very good team. Why? Like we just talk. वैसे अभी जब अपन ये इंटरव्यू मतलब मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो नीदरलैंड ने ही अमेरिका को हराया है। We just talk, you know. But there is, I know, Argentina, France, Spain. It's like a lot of good teams. There is like Croatia, Belgium, and Denmark. They very tough team, you know. But I just choose 3 team and let's see what's gonna happen. Let's see. Morocco still good. Morocco is very good, but it's if we talk about like top 5. Sorry, brother. Sorry. All right, man. I think it's time for us to do the rapid fire questions, man. So, Khabib hasn't heard any of these. He doesn't know what I'm about to ask. बोला कि अब मैं रैपिड फायर क्वेश्चन करूंगा, इसके बारे में हबीब को कुछ नहीं पता है, वो कैसे आंसर देगा ये भी मेरे को नहीं पता है। It's gonna be very simple. It's one thing or the other, and you just have to answer it as quickly as you can. All right, wrestling or football? रेसलिंग और फुटबॉल। पता नहीं रेसलिंग और फुटबॉल उसने बोला और मैंने भी बोला, ये चूतिया टाइप की हरकतें एक बार होती हैं, कभी कभी होती हैं ट्रांसलेशन के समय। सॉरी। Wrestling, restaurant. Wrestling or football? No, for sure football, brother. For sure. बोला रेसलिंग और फुटबॉल में फुटबॉल। I'm tired with wrestling, brother. All my life I was wrestling. Let's just football. All right, beach or mountains? What? Beach, the beach. You know the beach or mountains. What happened with your language? I don't understand what. I'm living very close to beach, but I don't like to go beach. It's main mountain. I love that. Summer or winter? No, summer. ये सब इजी है तो मैं इसका फोकट ट्रांसलेशन करके कुछ समय बर्बाद नहीं करूँगा, बट इंटरव्यू देखना आपके लिए ज़रूरी है तो चलने दूँगा। Summer. Sorry, Canada. Yesterday was too cold. You want to call or text? Call much better, man. Call is much better. Okay, I'm not gonna lie. I don't know how to pronounce this. It says sushi or verinki. सुशी और एक कजाक दागिस्तानी डिशेस के बारे में बात कर रहे हैं। No sushi, no vareniki, brother. Khinkal. Vareniki. Either. Okay, say no more. Like Dagestani food. You have to try khinkal. Alright, Dagestan or Abu Dhabi? No, brother. Nothing like Dagestan. Dagestan, I love Nothing that. like Dagestan. Coaching or fighting? Next one. Wow. Coffee or tea? Coffee. Pizza or burgers? Depends in what country. Wow. I think Canada is not good with pizza and burger too. Like. No, we have some great burger and pizza places. If you guys know some good burgers, send me location. Yeah, for sure.
Noor Burger. pizza. Noor pizza is best pizza in Toronto. I think burger is better. Burger is better. Okay. Prediction for Islam's next fight. इस्लाम के नेक्स्ट फाइट के लिए प्रेडिक्शन Next fight, Islam next fight. Islam's next fight. What's the prediction? It's gonna be. I told Islam like even before last fight, with Charles Oliveira, I told him like Volkanovski is gonna be tougher than Charles Oliveira, like before the fight, because he was like if बोला कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि वोल्कानोस्की जो है ओलिवेरा से भी ज़्यादा टफ चैलेंज होगा इस्लाम के लिए Charles don't make weight, Volkanovski is supposed to fight with him, and like I think is like he have good experience, of course, like experience like Charles and Volkanovski, they have same. Okay, they have both good experience, but if you talk about like fighting IQ and big heart, I think Volkanovski is better than him. बोला कि जहाँ तक फाइटिंग आईक्यू और हार्ट की दिल की बात है मैं भी ऑनेस्टली मानता हूँ कि फाइट आईक्यू वोल्कानोस्की में बहुत ज़्यादा है और हार्ट हार्ट आई डोंट नो कि ओलिवेरा जितना है कि नहीं है बट फिर भी वोल्कानोस्की बहुत इंटेलिजेंट है और प्लान बना के आएगा And I think Volkanovski gonna be tougher opponent for Islam than Charles Oliveira. But anyways, who cares? We're gonna finish this guy. सी उसने ये नहीं बोला कि इस्लाम इज गोइंग टू फिनिश दिस गाय उसने बोला कि वी आर गोइंग टू फिनिश दिस गाय ये डिफरेंस है उसकी टीम में और दूसरों में All right, I have a heavy one. I don't know if you want to answer it, but is there anyone that you wish you fought in the past or that's currently fighting? बोला कि अभी करंटली जो भी लोग फाइट कर रहे हैं उनमें से ऐसा कौन सा फाइटर है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि शायद आपने उससे फाइट की होती है In my mind, yes, it was couple fighters. It was couple fighters for sure. Okay, GSP. जीएसपी क्योंकि कनाडा है कनाडा कनाडा Okay, if you guys want, but I respect this guy a lot. You know, it's like I grew up with his fights. You know, when he became UFC champion 2007, and I was like I was even don't beginning my professional career. I was amateur fighter, and I watched a lot his fights with my father. And you know, it's like GSP was like like role model in MMA for me. You know. बोला कि जीएसपी मेरा रोल मॉडल था And if you guys want fight, okay, let's say GSP because we're here. We just talk. You know, we can say whatever we want. But of course, like it was Tony Ferguson for sure. टोनी फर्गसन शानदार आंसर For sure. But this has never happened. And you know, Tony Ferguson, GSP. Okay, you guys want GSP, and I think it was 2014-15 when Anthony Pettis was UFC champion. Like it was Anthony Pettis. Like that time, I really want to fight with this guy, but then he lost his title versus Rafael dos Anjos. After that, his career go down. He never come back, and it was Anthony Pettis, Tony Ferguson, and Canadian तीसरा फाइटर एंटनी पैटिस superstar GSP. No one can take you out of the state that you're in, you know, mentally and emotionally. I mean, from the outside, you just have a good way of separating. Sometimes I lose my control. Yes, we've seen. Sometimes, you know, it's like I'm human. एकदम से वीडियो में कट था ये मैंने नहीं किया है पता नहीं बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई खैर देखते हैं So sometimes I lose my control. Of course, when a lot of people look at you, of course you have to control yourself. But sometimes I'm not nice person too. No. You understand what I'm talking? I feel you. Yes, say no more. I guess it just makes me think of everything that happens in Toronto, you know, being from Regent Park. There's a lot of different Muslims in different communities in the city that are engaging in like gun violence and fighting in the streets, and for a lot of them their ego is वो टोरंटो के मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं attached to whether or not they could win fights.
And so I guess now that you're outside of the octagon, and you're not fighting in professional capacity, what would you say about people that like kind of fight in the streets to gain their respect? And what are the ways that you gain your respect without having to fight anymore? वो बोल रहा है कि यहाँ मैं कम्युनिटी में है कि लोगों को अपनी इज्जत पाने के लिए वो स्ट्रीट में फाइट करते हैं और रिस्पेक्ट अर्न करते हैं। तो आपका क्या मानना है इस बारे में? It's a very good question. You know where I'm from, right? बोले तुम्हें पता ना मैं कहाँ से हूँ? Dagestan, from Dagestan. If you don't wear if you don't have gun and you're from Dagestan, it's mean you have to wear. This is like same culture like in Dagestan. But here I don't know in Canada, but US everybody wear gun. And if people ask myself if I can make decision, like I think you can wear gun inside your house, just protect your family. वो गन कल्चर के बारे में बोल रहा है कि अगर गन रखनी भी है तो मैं तो घर के अंदर रखो, बाहर नहीं। कनाडा की बात कर रहा है वो, दागिस्तान की बात नहीं कर रहा है। फर्क है। Because anything can happen. You with your family, kids, you the king inside the home. Protect yourself. But outside, I prefer to say no gun. This is my opinion, and because a lot of crazy people wear gun, sometimes they don't like something happened, it's like you become very emotional, and you can do whatever you want, you can make mistakes, you can kill people, it's like because of emotional. But inside your house, okay, you relax, you with your family, kids, okay, some people come to your house, protect yourself, but not outside. This is my opinion. And fighting outside, if you fighter and you train and you know how to, okay, let's say to smash people, okay, it's like it's not good to fight. Like all my life when I was young, like I remember my father always told me like you cannot fight street, you cannot fight, but I was young. बोला कि पूरी जिंदगी भर मेरे पिताजी मेरे को बताते रहे कि यू कैन नॉट फाइट ऑन स्ट्रीट। And in that क्योंकि मैं बता रहा हूँ, ये किस्सा हबीब के पिता ने बताया था कि मैं इसको हमेशा से बोलते रहा कि इसको स्ट्रीट में नहीं फाइट करना है, क्योंकि अगर ये स्ट्रीट में फाइट करेगा तो इसके पास अनफेयर एडवांटेज है, क्योंकि इसको पता है कि लोगों को हराना कैसे है, उनको पीटना कैसे है। इसलिए स्ट्रीट में फाइट नहीं करना, सिर्फ फाइटिंग की जगह चाहे वो केज हो या रिंग है वहाँ पे फाइट करना, क्योंकि जो सामने फाइट कर रहा है आपसे उसको भी आपको हराने के, आपके पीटने के तरीके पता हैं, इसीलिए वो फाइट फेयर होगी। बट स्ट्रीट में भी किसी लड़के के साथ अगर आप फाइट करते हो तो उसको उतना नॉलेज नहीं है फाइट के बारे में जितना आपको नॉलेज, इसलिए वो अनफेयर है। देखते हैं हबीब क्या बोलता है। Pakistan, it's not like US or Canada. Like if you meet like 100 people, like here in Canada, maybe only one know how to wrestle. But in Dagestan, if you meet 100 people, if you meet 90 people, they know how to wrestle. They know how to fight. And वो बता रहा है कि दागिस्तान में 100 में से 90 लोग को रेसलिंग आती है, यहाँ पे 100 में शायद एक को आती है। and this is like very big traditional in Dagestan. Even like when I was in school, college, like 80% of guys, they was doing MMA, wrestling, judo, like grappling, jiu-jitsu, boxing, and it was normal. It was normal to fight, but there is always have to be fair. You cannot just because of you're stronger than him, you cannot just beat him. And it's have to be fair. This is not problem only here. ठीक है, मैं बता रहा हूँ, वो फेयर वाली पॉइंट बोल रहा हूँ। Here in Canada, US, Europe, this is problem in Dagestan too. Like we talk about like this bully stuff, this everywhere, it's everywhere. Kids is kids, like when you're 10, 15, you don't understand nothing, like, and this is very dangerous time, I was grow up, I was 15 too, I was 14, but I think because of my father, maybe, yeah, like because of his advice, because of he spent a lot of time with me, he talked to me a lot, about this stuff. I think that's why I control myself. But
anyways, I was fighting in street a lot too, because because I was grew up in Dagestan, and it's very important to parents spend time with kids. Sometimes like weeks and weeks they don't even see their kids. They go to their work, they come back, their kids sleep. It's like it's very important to spend time. To वो talk बोल with रहा है कि इसीलिए अपने बच्चों के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है kids. This is bad. This is good. And ताकि आप उन्हें सही गलत का डिफरेंस something करना like सिखा this. सको. No, that's a beautiful answer, man. Thank you so much for that, man. I guess we explored you as a fighter, you as a coach, and now I'm thinking a lot about what your goals are outside of coaching and outside of fighting. Like, are there other dreams that you have for yourself now that you've conquered these two, kind of worlds in ways that no one could imagine? Is there other worlds that you want to enter? वो पूछ रहा है एक्चुअल में उस क्वेश्चन का मतलब है कि कोई नई चीज़ आप करना चाहते हो क्या. Outside, uh, number one goal is like spend time with family. I think वो बोल रहा है कि मैं अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहता it's हूँ. like most important thing. And I try to try to find balance even 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 last how many like since September, October, November, even like this last 4 5 months we cancel Lara Eagle FC show because of like Usman, Islam, Abu Bakr, Zuba, Umar, like everybody was fighting. बोला कि हमारे सारे फाइटर फाइट कर रहे थे इसलिए ने ईगल एफसी के बहुत सारे शो कैंसिल कर दिए. वैसे मैं आपको ईगल एफसी के बारे में बताऊंगा कि शो कैंसिल होने का कारण एक तो ये है कि जो हबीब बता रहा है, इसके अलावा भी एक बड़ा कारण है. And I don't have time to spend with other my projects business time because I have to stay focused with these guys because they're supposed to win. And this year we have like 95% winning streak in our team. Like almost everybody win. It's इसमें बोला like कि इस साल जो है we win. 95% I think this year जीत हुई है how हमारी. many fights? Like 20 fights, something like this. This is crazy. Even like alone Usman, he win 3 fights. Islam, he win 3 fights. Like two guys, they win 6 fights and they become UFC and Bellator champs. उस्मान और इस्लाम की बात कर रहा है, दोनों ने 3 फाइट किए, तीनों फाइट जीती. And it was like my priority. They was my priority, because they have biggest fight in their life, and I realized I have to spend a lot of time with them, and goal, like, of course I have some business projects, but business right now is like couple years ago it was a little bit hard because I just beginning. Right now I can control my business from Canada. Cool. It's like, मतलब बिजनेस की जहाँ तक बात है, बिजनेस तो मैं कहीं से भी कंट्रोल कर सकता हूँ. but most hard time for me right now it's like to spend time with family, तो सबसे कठिन बात मेरे लिए अभी फैमिली के साथ समय बिताना है. kids. This is my goal. That's a beautiful goal, man. And I think we're nearing the end, and so for the last few questions, I wanted to pivot more to your position as really the undisputed champion of the world, and like constantly you're hearing that you're the greatest and that you're undefeated and that no one can touch you, in the space that you entered. And it's important to be that, it's important to have that kind of a power and to hold that position. But it's also important to be humble and to have humility. And you seem to somehow be a really humble person. बोला वो ये बोल रहा है कि मतलब अभी तो प्रेमाइज बना रहा है, क्वेश्चन पूछा नहीं है. हम यही पूछना चाह रहा है कि दुनिया वही जितने भी जो नई पौधे वो आपको मानती है कि यू आर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. अभी जो अपनी जनरेशन में अनडिफीटेड हो, ऐसा कोच भी अनडिफीटेड रहोगे, मतलब मोस्टली अनडिफीटेड हो. तो इन सब के बावजूद हम्बल बना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम्हें देख के लगता है कि तुम बहुत हम्बल हो.
even though you hold that position. And so what are ways that you try to stay humble when like you get praise from all over the world? पर अब पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ कर रही है तो ऐसे कैसे हम्बल बने रह सकते हो? Because praise can be a dangerous thing, you know, when people are praising you left, right, and center. So how do you stay humble in it? What I can say, but like how I stay humble. I don't know, but I just live my life. You know, it's like the way how my parents teach me. Okay, what I can do because I'm world champion. I cannot smash you here. हालांकि मैं सिर्फ चैंपियन हूँ तो स्पेशल क्या हूँ? मैं तुमको यहाँ स्मैश थोड़ी कर सकता हूँ। मैं वैसी ही ज़िंदगी जीता हूँ जैसे मेरे बाप ने मेरे को सिखाया, पिता ने मेरे को सिखाया। I have to hope be not, nice yeah. with you. You know, like what I have to do. Like for example, like a lot of people surprise. Oh, you don't do this, don't. But this is like our responsibility. You know, it's like what I have to do because I'm world champion. I have some credit or like I don't understand question honestly. वो बोल रहा है कि मेरे को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है कि वर्ल्ड चैंपियन हो तो उसके लिए हम्बल बने रहना क्यों मुश्किल है? इसलिए मुश्किल है क्योंकि दुनिया आपकी चाटती है और आप सर पे चढ़ते हो। बट हबीब शायद वैसे एनवायरनमेंट में पैदा हुआ है जहाँ पे ज़बरदस्ती कोई किसी को चने के झाड़ में नहीं चढ़ाता है। I mean, I think a part of your humility Like is that like you don't like humble. Okay, like humble. Like what? What I do? Why you think I'm humble guy? Why? It's a good question. I think it's like why you think I'm humble? I think the thing is that most people, if they were अब वो पूछ रहा है कि वाई डू यू थिंक आई एम हम्बल? तुमको क्यों लगता है कि मैं हम्बल हूँ? वैसे तो हबीब हम्बल है बट उसके पास इस क्वेश्चन का जवाब नहीं होगा क्योंकि वो हम उसको ये क्वेश्चन करना था क्योंकि उसके सामने जो कागज रखा है उसमें लिखा हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि ये आदमी टीवी पे अच्छा दिखाई देता है इसीलिए इसे क्वेश्चन करने का मौका मिलता है। आपने देखे हैं न्यूज़ के एंकर? वो सारे के सारे एंकर इसलिए टीवी पे नहीं है क्योंकि उनको अच्छा नॉलेज है। 95% उनमें से ऐसे हैं क्योंकि वो कैमरे के सामने अच्छे दिखते हैं। और वो पूछ रहा है कि मेरे को क्यों कह रहे हो कि तुम हम्बल हो? मैंने कैसा क्या है जो हम्बल लगता है? अगर वो आदमी एमएमए को जानता ना तो उसके पास जवाब होता है इस बात का। the world champion, they would think मैं आपको बताऊँ एक हम्बल, जैसे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी यूएफसी 220 229 तो मेरे ख्याल से मैकग्रेगर वाली फाइट थी, राइट? उससे पहले वाली फाइट में शायद उससे पहले की कहीं फाइट थी या उसके बाद वाली फाइट थी। तो तब इस्लाम और हबीब शायद दोनों एक ही कार्ड में फाइट कर रहे थे। पहले इस्लाम फाइट जीता, फिर ये जीता। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हबीब आया और फिर इस्लाम आया। तो जैसे ही इस्लाम आया ना तो हबीब हट गया और अपना जो टाइटल था ना यूएफसी का वो उसके बाजू में छोड़ के चला गया। दैट्स व्हाट यू से यू आर हम्बल, ठीक है? क्योंकि टाइटल इम्पोर्टेंट है बट भाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और वो बताना चाह रहा है कि जो टाइटल मैंने जीता मेरा भाई भी जीत सकता है। दैट्स हम्बल। अगर आपको लगता है कि जो काम किया वो मैं ही कर सकता हूँ फिर वो हम्बल नहीं है। मैं होता तो ये जवाब दे सकता था बट भाई के पास कागज में लिखा है इसलिए वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है। that they can smash me in my face right now, you know. But I think that the fact that you're thinking of yourself as a world champion doesn't mean that you can do or act a certain way is amazing, you know. You know, trust me, my friend. Like any people, anybody in the world who just come out from poor life and he becomes success. Let's say like not only in sport, like in like anywhere he becomes success, he's gonna be humble because लगे जो कोई भी हो दुनिया में जो मेरी जैसी गरीबी से आता है और सक्सेसफुल बनता है वो हम्बल ही रहेगा। he see like other life and see his this life like he can compare, you know. He can like if he's not crazy, of course. Like some people like they lose their mind, they become famous, strong, rich. Okay, I can do मतलब कुछ लोग होते हैं जो अमीर बन के मतलब पागला जाते हैं, मैं उनमें से नहीं। whatever I want, but trust me, not many people like this. Yeah. Like A lot of people lose their minds. I think a lot of people forget where they no, came from. most of them they nice people, most of them. But of course there is like some people they lose their mind, you know, and they lose. One of the reason why they lose, one of the biggest reason, not because they bad people, not because they start to using like drugs. वो बोल रहा है कि बॉस कुछ लोग हैं जो माइंड लूज़ कर जाते हैं, बाकी सब तो नहीं लूज़ करते हैं बट जो लूज़ कर जाते हैं उनके पीछे कारण ये है
कि ये नहीं कि वो पागल हैं या फिर गलत आदमी, वो ये है कि वो ड्रग्स और शराब वराब पीने लगते हैं इस वजह से। alcohol. मेरा थ्योरी इसके बारे में अलग है। मेरा मानना है कि कुछ लोग हम्बल होते हैं, कुछ लोग हम्बल नहीं होते हैं। गरीब भी लोग ऐसे मिलेंगे जो हम्बल नहीं है, और अमीर भी ऐसे कई लोग मिलेंगे जो हम्बल हैं। तो जो आदमी हम्बल नहीं होता है वो अमीर बन के भी हम्बल नहीं रहेगा, और जो आदमी हम्बल है वो गरीब बन के भी हम्बल रहेगा। खैर, ये मेरी थ्योरी है। Everything, यहाँ आप मेरी बात नहीं, हबीब की बात सुनने के लिए है। and they lose because alcohol is mother of everything's bad, you know. बोला कि अल्कोहल जो है हर गलत चीज़ की जड़ में है। Like sins, like everything come after alcohol. If you guys use like you like doing these drugs and alcohol, you're gonna lose your family, you're gonna lose your friends, you're gonna lose your respect, like everything, you know. बोला कि तुम अपनी फैमिली लूज़ करोगे, तुम अपना फ़ैन लूज़ करोगे, यू विल लूज़ रिस्पेक्ट अगर अल्कोहल पीते रहोगे तो। एक्चुअली मैं वैसे पर्सनल नोट पे बताऊँ कि आई डोंट ड्रिंक। आई हैव हैड 3 पैक्स इन माय लाइफ इन टोटल। बट शायद मेरी फैमिली में मैं ही इकलौता ऐसा होऊंगा। मतलब बहुत कम लोग होंगे जो नहीं पीते हैं। एनीवेज, This is like it's very hard to stay, you know, in like it's very hard. I know this is true. It's very hard, but most of them like bad people, and you can see like when you watch like some person, you can understand this guy bad or good, you know. This is not hard, and just check he use alcohol. Like 99% of bad people, they use alcohol, and that's why I said no alcohol to my promotion. No bad like companies to my promotion, because of bad companies, how many people they lose their family, they lose respect, they lose money, they lose houses, like they lose everything. And how many people become billionaires because of bad companies? How many like one person, and millions they lose everything, you know. And like if you see some bad people, just check he use a lot of drugs, and he use a lot of alcohols, you know. It's like my opinion, I think I'm not like nicest guy, like best guy. I'm like maybe 50-50. बोला कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैं बुरा भी नहीं हूँ, अच्छा भी नहीं हूँ, मैं 50-50। Sometimes but like when you talk about humble, like why you think I'm humble, and for वो फिर से पूछ रहा, व्हाई डू यू थिंक आई एम your हम्बल। question. देखा, अभी भी जवाब नहीं है उसके पास, वो हंस के आगे बढ़ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा। I'm like you guys. I'm Sam. Only one thing I do better than you. I beat people. I'm better than you guys. बोला कि मैं सब तुम लोगों के जैसे ही हूँ, बस इकलौती चीज़ जो मेरे को आती है वो लोगों को पीट सकता हूँ बस। I know how to beat people. I know how to hurt people. But I never do this. I was doing this inside the cage. Now I'm finished. I'm same like you. I go sleep, wake up, drink coffee. Sometimes like bad mood, good mood. Like I'm same. Nothing different, you know, between me and you guys. That's humility, man. You defined humility, man. I think you were talking a lot about home, and it's like a lot of what makes people lose their center is that they forget about home. You know, once they make a little bit of money and like they leave their city, they don't go back to their city. They don't go back to see their friends or their family. And did you have like a central group around you of people? Like outside of that octagon, there's a group of people that are waiting for you, that are cheering you on. Who are those people, you know, that are rolling with you, that come with you to the fights? Are they people that you grew up with? No, like most of them, I grew up with them. You know, most of the people, they was when I was like 14, 15, they was 20, 22. They was my father world champions. They was my father favorite students, you know. And because of they have like amazing relationship with my father, and they still around me. I can imagine if my father was bad person, of course everybody gonna run from him. But even when they finish their like professional career, they was still talk and still was like around my father, like his kids, you know. And I remember when I was inside the gym, like he never take care of me like I'm his son. He always say, inside the gym, everybody is my son. Nobody is like special here.
बोल रहा है अपने पिता के बारे में बता रहा है कि जब जिम में थे तो सभी कभी किसी से उसने अपना मतलब हबीब को बेटा होने के कारण स्पेशल प्रेफरेंस नहीं दिया। उसने बोला कि जिम के अंदर सभी मेरे बेटे हैं। Everybody follow my rules, and there is like no this nephew, this son, this is my neighbor, or this is my student. No, he take care everybody like his sons. Like even Islam like and couple of fighters. They was like Islam was like one of them my father favorite students. बोला कि इस्लाम मेरे पिता का वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट You है। know, he treat him like he treat me. You know, it's like same inside the बोला उनका बिहेवियर इस्लाम के प्रति वैसे ही था जैसे मेरे प्रति था। gym. Of course, in house like at home, it was different relationship. But for my father, they was all same, and we still talk. We still like like not like just friends. Like we like family. You know, we all know each other parents. We all know like kids. We're still talking, and when we someone go to the fight, when like for example Islam or Usman, Omar, someone have fight week, we all flights, you know. Even me, I just landed here in Toronto. बोला कि जब हम में से किसी की फाइट होती तो हम सभी के सभी जाते हैं। Usman was in Chicago because I didn't have visa. I cannot go there, you know. But with him, it was like 15 people from बोला शिकागो में मेरे को वीज़ा नहीं था इसलिए मैं नहीं जा पाया पर बाकी सब गए। Dagestan. They all was grew up with us together, and when someone have important fight, we all flies, you know. It's beautiful, man. A really important thing that I've been thinking about for the last week is how you promised your mother that your last fight would be UFC 254, and you've honored her wishes. And बोला कि अपनी माँ से उसने जो प्रॉमिस किया था कि आखिरी फाइट 254 की होगी, सॉरी 354, why is that important 254। to you? You know, to honor that promise that you made to your mother. बोला कि ये तुम्हारे लिए क्यों ज़रूरी है कि तुम ऑनर करो अपनी माँ को जो प्रॉमिस किया। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है। अगर कोई ऑनर नहीं करे तो ज़रूर पूछना चाहिए उससे कि आखिर क्यों तुमने अपनी माँ से किया हुआ प्रॉमिस ऑनर नहीं किया। टू बी ऑनेस्ट आई एम अ वेरी डिसऑनरेबल पर्सन इन दैट वे। बट क्वेश्चन वही होना चाहिए जब आप ऑनर नहीं कर पाए किसी प्रॉमिस को। आप जब ऑनर कर रहे हो तो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। फिर भी इनको पूछना है तो वो पूछ ही रहे हैं। वो एक्चुअली ये पूछना चाह रहे हैं कि तुम फाइट करोगे कि नहीं करोगे। Because of I finished my career, because of I promised mother. That's why this one question discussion between me and my mother become very famous. But we have a lot of different things who like people don't know about this, you know. Not only this promise I follow not only this promise to my mother, like I follow everything बोला about कि इसके mother, अलावा भी कई because चीज़ें हैं जो प्रॉमिस की है मैंने अपनी माँ से, उनको ही फॉलो करता हूँ। you can have friends or kids, whatever, like you can have whatever you want, but you're never gonna have one more mother. You have only one mother, you know. And for me it's everything. For me it's everything, you know. uh, because of mother we can go to Jannah, you know. This is very मतलब माँ की वजह से हम जन्नत जा सकते हैं। very big one of the door, you know, one of the door. Like we can treat mother very good, and because of this, like we can go to the Jannah, you know. I love mother because of millions and millions reason, you know. And I know even like in Dagestan, like not, this is not about like Dagestan or not. I know a lot of people, they have bad relationship with parents, and I really don't understand this. How people have, how can people have like bad relationship with parents, like, and yes, and
mother for me is everything. Even now, she's still with me, like living with me, like in same house, and I treat her like queen, you know. That's beautiful, man. Please, you guys, warm round of applause for the greatest in the world, man. ठीक है, तो ये था इंटरव्यू हबीब का। आप बताइएगा कि कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, और आगे ऐसा कुछ करा जाए या ना करा जाए। अपने एक ओपिनियन ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ अपनी लाइफ में, तो मेरे पास सोचने का टाइम नहीं है। तो मेरे लिए आप सोचिए और बताइए कि क्या ऐसे और भी एपिसोड किए जाएं। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे पढ़ के अच्छा लगेगा। ये था इंडियन फाइट जंकी, आप देख रहे थे। एक ही चीज़ है, ये था इंडियन फाइट जंकी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। लड़ेंगे, जीतेंगे।